About the hormones of adrenal medulla. Now adrenal medulla is the inner part of the adrenal gland, and because of the adrenal medulla, adrenal gland is known as a gland of emergency. Now this adrenal medulla is neuroectodermal in origin, so sympathetic nervous system and ectodermal layer both are essential in the development of this adrenal medulla. So here there are the glandular cells which are called as the chromaffin cells, and these glandular cells are again the modification of the cells of sympathetic nervous system, basically the postganglionic fiber of sympathetic nervous system. So this, because of the sympathetic nervous system and the relation between adrenal medulla, this is also called as a sympathetico-adrenal system, because in hormones of adrenal medulla, sympathetic nervous system playing a major important role. So this hormone released from this adrenal medulla, they are the amine hormone derived from amino acid tyrosine. The catechol is also important in the formation of this hormone. So these hormones are also called as a catecholamine. Now there are the two hormones released from this. It is a epinephrine and norepinephrine. Epinephrine, which is also called as adrenaline. Norepinephrine, which is also called as a noradrenaline. Adrenaline is a hormone as well as a neurotransmitter derived from sympathetic nervous system, because there is a relation between these two. Epinephrine, it is working during the emergency situation. So 3F you should remember while remembering the epinephrine. So it is preparing the body for fight, flight and fret. So ये तीन emergency situation के लिए this epinephrine is preparing for the body. So it is secreted in the stressful situation. So this is also called as a stress hormone. So its effect is same as the sympathetic nervous system. What are the functions of adrenaline? So this is during when the body is undergoing stress or some anxiety, some fear. Even if during the exam period, if you have a fear of exam, your adrenaline will start secreting, and that will disturb the metabolism of your body, which is not good for the body. So अगर आप बायोलॉजी सीख रहे हो तो आपको ये आपका हेल्दी लाइफस्टाइल भी ध्यान में रखना जरूरी है, because this adrenaline is not at all essential for life. ये रिलीज होता है तो बॉडी को ये डिस्ट्रॉय करता है. So what it is doing exactly? It is increasing the heart rate, it is increasing the BP, it is increasing the blood sugar level, it increases the glycogenolysis. अभी glycogenolysis में क्या होता है? That is, glycogen is getting converted into glucose. So that is a glycogen. Glycogen का lysis होता है और बॉडी में ग्लूकोज सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है. So blood sugar level increases. अगर ये क्रोनिक होता है, हमेशा स्ट्रेस आ रहा है, एंजाइटी है, हमेशा अगर ये हो रहा है, तो ऑलवेज लाइक ब्लड शुगर बॉडी में हाई रहेगा, इंसुलिन का काम थोड़ा कम हो जाएगा, एंड लाइक पर्सन में सफर फ्रॉम अ डायबिटीज. So इसीलिए stress management is very important. So it increases the glycogenolysis, that is glycogen is getting converted into glucose. It is a vasodilator, blood vessel को dilate कर देता है, so body में blood flow increase हो जाता है. So increases in blood supply to brain, heart and muscles. It dilates the pupil. Same the sympathetic nervous system जो stressful situation में काम करती है, वैसे same adrenaline भी काम करता है. It contract the spleen, you know, spleen is a blood bank. अगर वो contraction हो रहा है मतलब blood body में ज़्यादा release हो रहा है, blood volume body का बढ़ रहा है तो BP level बढ़ रहा है. Respiratory rate increases, trachea dilates. Trachea dilate होता है तो ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जा रहा है. ऑक्सीजन जितना ज़्यादा मिलेगा उतना ATP प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ जाएगा. And immediately like your hands and your legs, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है. सो आप पूरा एंगर में आप क्या क्या करते हो आप सोचो, वो पूरा एनर्जी आपका जो आता है वो एड्रेनालिन सिक्रीशन से आता है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेस एंड इमरजेंसी हार्मोन, एंड हेंस एड्रेनल ग्लैंड इट इज कॉल्ड एज अ ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी, बिकॉज वो सिक्रेट करता है एड्रेनालिन को. Now noradrenaline, see adrenaline secretion is 80%, noradrenaline secretion is just 20%. So noradrenaline
ब्रिंग बैक एवरीथिंग टू नॉर्मल, लेकिन उसका कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी कम होता है, तो अपने को बैक टू नॉर्मल आने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। व्हेन देयर इज स्ट्रेस और एंजाइटी और फियर और टेंट्रम आउटबर्स्ट होता है, अपना टेम्पर आउटबर्स्ट होता है, बहुत ज़्यादा तुम चिढ़ जाते हो, तो वो सिचुएशन से बाहर आने के लिए टाइम लगता है, बिकॉज नॉन एड्रेनालिन इज वेरी low in its amount. So bring back everything to the normal condition, which exactly act opposite to adrenaline. Alright, so this is about the hormone secreted from the adrenal medulla. Adrenal medulla and adrenal cortex में generally you get question, differentiate between the adrenal cortex and adrenal medulla. So both of the part of adrenal gland, cortex is the outer part, medulla is the inner part. Cortex basically 75% of adrenal gland is a cortex and 25% is a medulla. Now they are differentiated into various region, like हम लोगों ने देखा कि it is differentiated into zona granulosa, zona fasciculata and zona reticularis. वैसे इसमें कोई differentiation नहीं होता है medulla में. These hormones of cortex are steroid in nature, they are amine in nature. Cortex is essential for life, क्योंकि वो सोडियम पोटेशियम लेवल बैलेंस कर रहा है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कर रहा है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कर रहा है, सो इट इज बेसिकली इसेंशियल फॉर लाइफ, लेकिन ये बॉडी में पूरा डिस्ट्रक्शन ही करता है, सो बेसिकली दिस इज नॉट इसेंशियल फॉर लिविंग. दे आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन, दे आर इक्टोडर्मल इन ओरिजिन. So these are the few differentiating point you must remember between the cortex and medulla.